Assalamu alaikum guys, this is your teacher Dr. Noor Muhammad and you are watching me on AS Level Biology lecture series subject code 9700. As you all know that we are studying right now the chapter number 1 in combination with chapter number 4, and we started this chapter from the concept of cell and cell theory. We took all the basic जो हमें इस चैप्टर में चाहिए थी वो सारी हमने डिस्कस की बेसिक्स को, एंड देन फाइनली हमने सेल स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया. एंड वी आर कवरिंग सेल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, and we are non-specifically covering it as general structures of cell. We have covered the first membrane, that's the outermost membrane for plant cell, that was cell wall, and we discussed cell wall in detail. And then in the last lecture I started cell membrane, and I've told you that cell membrane, unlike cell wall, has got a very typical structure and it's a very thin and delicate membrane. So after the invention of जो आपकी normal microscope होती है, जो light microscope या compound microscope होती है, the structure of cell membrane was not that clear. But after the invention of electron microscope, where the magnification power was 100,000 times higher, and then we started getting hints of the structure of the cell membrane. The first model of that explained the cell structure was unit membrane model, and we talked about that model in the previous lecture. Today we are going to talk about the model which is actually the detailed explanation of the cell membrane, and this model not only explains the structure of cell membrane but you can relate to the function of cell membrane after learning the structure. So आज हम जो structure पढ़ने या जो topic पढ़ने जा रहे हैं, you can see that on the board that topic is fluid mosaic model. Fluid mosaic model, we are going to talk about fluid mosaic model today. सही है जी. तो बेटा this model was given by two American biologists, Singer and Nicholson. Singer and Nicholson. This model was given by Singer and Nicholson, two American biologists. Before getting into the detail of this model, it's really important कि आपको इनके मॉडल के postulate समझ में आ जाएं, so that I can then explain every single point just in a flow, ठीक है, with the help of my diagrams. So it's really important कि before moving forward हम जो है rather than direct जो है ना वो स्टडी करें, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट हाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस मॉडल. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द पॉइंट्स नाउ, and then inshallah I'll explain each and every point, and this is going to be a detailed discussion, so just get ready for that. So according to Singer and Nicholson, cell membrane Singer and Nicholson का ये मॉडल है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, postulate number one is that cell membrane, it is a lipid bilayer. The first postulate of this model suggests that cell membrane is a lipid bilayer. Cell membrane is a lipid bilayer, यानी सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई है उसमें लिपिड की दो लेयर्स हैं. सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर. जबकि हमने, अगर आपको याद हो, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जब बताया था तो हमने कहा था कि वहाँ पर स्पेसिफाई किया गया था कि सेल वॉल इज अ सिंगल, सेल मेम्ब्रेन इज अ सिंगल मेम्ब्रेन. जबकि यहाँ पर जो सिंगर और निकोल्सन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए जो डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी किया, तो दे प्रपोज दैट सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर, यानी सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड की दो लेयर्स पे कंसिस्ट करती है. एंड विच टाइप ऑफ लिपिड? Phospholipid. Which type of lipid is there in cell membrane? Phospholipid. Phosphate containing lipid. So cell membrane is a lipid bilayer of phospholipid. ठीक है, it is a lipid bilayer. दो layers हैं किसकी? Phospholipid molecule की. ठीक है, phospholipid molecule क्या होता है? फैट के साथ, along with fat, when you have phosphate group attached, that we call phospholipid.
We'll study phospholipid in chapter biological molecules, inshallah ta'ala. So cell membrane is a lipid bilayer. In which type of lipid? The phospholipid. Now each layer consists of two ends polar hydrophilic end and non-polar hydrophobic end. I'll explain everything, but just let me complete the basic postulate so that you can get the basic idea while I'll tell the concept. So each layer, number one, imagine karte jao कि it is made up of two layers of fats and each layer has two ends. One end is polar, which is hydrophilic, and other end is non-polar, which is hydrophobic. ठीक है ना? And how these ends are arranged? They are arranged in such a way. Arrangement of these ends are such that hydrophobic ends face each other. Both the layers की जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होंगे वो एक दूसरे के सामने आएंगे, एक दूसरे को फेस करेंगे. Whereas hydrophilic ends oppose each other. क्या मतलब हुआ कि the arrangement of lipid bilayer is such that hydrophobic ends of both the layers will face each other, whereas hydrophilic ends of both the layers will oppose each other. यानी वो एक दूसरे को देखेंगे, they will see in opposite direction, they will be in opposite direction. I'll draw the diagram after writing all the points. तो ये तो पहला हो गया कि it is a lipid bilayer. That's almost, जो composition wise अगर मैं बात करूँ तो almost 75% of the composition is on phospholipid. ठीक है जी, is on phospholipids. So it means that lipid bilayer is not the only thing in this structure. We have something else to discuss also. ठीक है, एक मिनट, just give me a second. I've lost. Okay, I hope I'm clear till this point that lipid bilayer से consist हो रही है. Lipid bilayer में कौन से ends हैं and how they are, and almost 75% of the composition is through lipid bilayer. Now, between these lipid bilayers, there are two layers. Between these lipid bilayer, there is a space. There is little space, but that space is not purely a space. Rather, another molecule is there which link these two lipid bilayers at different points. ठीक है ना? क्या मतलब दो layers हैं? I'll show you the diagram. I'm very excited to show you the diagram, but it's really important to give you points first. Na? So what is happening there? Here, that lipid bilayers, these are two lipid bilayers, just imagine these are two lipid bilayers, and between them there's a little space, but that space is not filled with air or not a vacuum, but rather it is linked, the two layers are linked at different points by another molecule. So what we should write here, and you will be very interested to know this because this is something you don't knew before. ठीक है, तो क्या कहा, क्या कहेंगे? Lipid bilayer, in between them
have molecules of कोलेस्टेरॉल. यस, कोलेस्ट्रॉल नाम सुना हुआ है आप सबने. मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल filling the space and linking layers. क्या है भाई? मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं, फैट की टाइप है कोलेस्ट्रॉल भी, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं जो कि लेयर्स को आपस में लिंक भी कर रहे हैं जगह जगह पर, और इसी तरह से वो स्पेस को फिल अप भी कर रहे हैं. एंड यू नो व्हाट, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. This is really important. This is the presence of cholesterol which is responsible for the fluidity of the membrane. What does this mean? That it is due to cholesterol जो cell membrane इतनी ज़्यादा flexible होती है, cell membrane इतनी ज़्यादा उसमें जो है ना वो movement होती है, fluidity होती है, and that is due to cholesterol because cholesterol उसको जगह जगह पे bilayer को link कर रहे हैं, so it is like a very flaccid or flaccid flexible membrane है. So it is responsible. I have no space to write it down. Just try it. Write it down here that cholesterol provides fluidity and flexibility to membrane. ठीक है जी. So these are some of the points. That's not all, obviously. These are some of the points about the cell membrane structure. I should highlight the important points that it is made up of lipid bilayer. Which type of lipid? Phospholipid. ठीक है. We have hydrophilic, polar end, and non-polar hydrophobic ends. ठीक है जी. We have almost 75% composition on this lipid thing. Then we have a molecule of cholesterol in the cell membrane, and this is cholesterol is responsible for fluidity and flexibility of the membrane. Okay, now that's the thing I want to discuss at this point, that here you see that every cell has got cell membrane, and I have told you that every cell as it has got cell membrane, it means we can conclude that which type of fat is going to be the most abundant fat in your nature. That is going to be phospholipid, because 75% that's huge. 75% of the membrane is made up of phospholipid. So it is no doubt most abundant type of fat we have. But at the same time, we also have another type of fat in the cell membrane, that's cholesterol. अब normally, that's a clinical discussion अगर मैं आपके साथ करूं कि normally जो है जब आप word cholesterol सुनते हो तो it doesn't sound nice to you because you think that cholesterol is something dangerous to us. And here I am telling you that every cell has cholesterol in it. अगर cell membrane में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. इट मीन्स यू कैन इमेजिन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दैट हाउ इंपॉर्टेंट सेल कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इज, एंड दैट्स नॉट द ओनली इंपॉर्टेंस. पहली इंपॉर्टेंस समझ गए कि अगर कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं हो तो योर सेल कैन नॉट फॉर्म. इवन जब सेल डिवीजन में सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होगी, सेल मेम्ब्रेन विल नॉट बी फॉर्म्ड एज ए स्टेबल स्ट्रक्चर. वो रप्चर हो जाएगी, वो स्टे ही नहीं कर सकेगी, स्टेबलाइज ही नहीं हो सकेगी, बिकॉज इट इज़ कोलेस्ट्रॉल जो दोनों लेयर्स को लिंक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है ना. तो इफ़ यू डोंट हैव कोलेस्ट्रॉल और इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन कोलेस्ट्रॉल तो आपकी ग्रोथ भी इफेक्ट होगी. फिर इसके अलावा वैसे ही बता रहा हूँ क्लिनिकल नॉलेज के लिए दैट कोलेस्ट्रॉल का ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है कि इट इज़ रिक्वायर्ड विद इन द लिपिड बाइलेयर इन एवरी सेल, बट it is the cholesterol which converts into vitamin D in presence of sunlight. It is cholesterol which converts into vitamin D in presence of sunlight. ठीक है. Yes,
That's the second importance. The third importance is that it is the cholesterol which converts into your hormones like sex hormones like testosterone, like progesterone, like estrogen. You have heard these hormones in your O levels, that these are the hormones which are controlling the overall sexual features of your body, ठीक है ना, of your life. Sexual aspect of life को control करने वाले, these are the hormones, testosterone, progesterone, estrogen, and these are actually derived from cholesterol. Cholesterol is the molecule जिसकी फिर लंबी चौड़ी जो है ना वो reaction से these molecules are derived. So you can easily imagine now that how important cholesterol is, how important this molecule is, because if we don't have cholesterol, if we have deficiency of cholesterol, three major aspects of your life will be badly affected. Number one, the most important, that cell membrane का structure कैसे form होगा. Your cells will not be healthy, your cells will not be having stable structures, and therefore cell death may occur जो है ना वो at a rapid rate, ठीक है, और आपकी growth उससे affect हो रही हो, आप उससे जो है ना वो healthy growth achieve नहीं कर पा रहे हो cell में. Secondly, this is the cell cholesterol, same cholesterol that is going to convert into vitamin D in presence of sunlight. So just imagine if you are deficient of cholesterol, so not only your cells are not growing, but जो आपकी जो bones हैं again made up of cell, उनके अंदर भी जो vitamin D की कमी हो जाएगी, because vitamin D जो है is responsible to strengthen the bones. Organification of bones, ये थोड़ा सा typical concept है, but just remember in easy way that vitamin D is responsible to strengthen the bones, ठीक है, we call that organification process. So vitamin D जो है वो जब कोलेस्ट्रॉल ही की कमी होगी तो सनलाइट से vitamin D नहीं बनता, it is cholesterol who converts into vitamin D in presence of sunlight. So अगर कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंट हो आप, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपके जो विटामिन डी लेवल्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, आपकी बोन्स सॉफ्ट होंगी, आपकी बोन्स हार्ड इनफ नहीं होंगी टू बेयर प्रेशर, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो you will be so prone to the bending of bones, and that can lead to even fracture of bones. Third, when cholesterol is not there or you are deficient of cholesterol, जहाँ ये एक बड़ा socially important topic है कि जब आप कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंट होंगे तो ऑब्वियसली पहली कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में इस्तेमाल होगा, दूसरा विटामिन डी में, और तीसरे नंबर पर फिर वो सेक्स हार्मोन्स ड्राइव करने में इस्तेमाल होगा. तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंट हैं तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है आपकी बॉडी में कि जो सेक्स हार्मोन्स के लेवल्स हैं, जो नॉर्मली जो लेवल्स होने चाहिए वो लेवल्स अचीव नहीं होंगे. यू विल बी डेफिशिएंट इन द लेवल्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, लाइक प्रोजेस्टेरोन, लाइक ईस्ट्रोजन, एंड व्हेन यू हैव द डेफिशिएंसी ऑफ दीज हार्मोन्स, ऑब्वियसली योर सेक्सुअल लाइफ, योर सेक्सुअल फीचर्स आर गोइंग टू हैव इफेक्ट ऑफ दिस, ठीक है ना. यानी आसान लफ्ज़ों में आप ये कहें कि अगर मेल के जितने भी सेक्सुअल फीचर्स हैं लाइक बियर्ड, मोस्टैच, लाउडनेस फैक्टर, प्रोडक्शन ऑफ सीमेन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, बॉडी पॉस्चर, एवरीथिंग जो मेल के जो फीचर्स जो उसको मेल डिस्क्राइब करते हैं, ऑल दोज फीचर्स विल बी डिमिनिश्ड इफ़ यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ कोलेस्ट्रॉल. इन द सेम वे जो फीमेल की फीचर्स हैं, फीमेल, यू रिमेंबर फीमेल ओ लेवल्स में आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, फीमेल हैज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज कम्पेयर टू मेल्स. तो अगर फीमेल्स डेफिशिएंट होंगी इन कोलेस्ट्रॉल तो ऑब्वियसली उनके जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो डेफिशिएंट होंगे, एंड दैट विल डायरेक्टली इंपैक्ट देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनके मेंसेस इफेक्ट हो जाएंगे, उनकी ओव्यूलेशन इफेक्ट हो जाएगी, उनके जो है ना वो fertilization effect हो जाएगी, and they will have again lot of problems in developing the feminine जो features होते हैं like development of breast, development of change of the quality of sound, development of pubic hairs, all these features will be affected, and that's the main thing females are experiencing nowadays. As I've told you so many times that I'm a medical professional, I've seen the clinical cases in gynecology particularly, that आज हमारी जो females हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. वन ऑफ द बेसिक रीज़न इज़ दैट दे डोंट हैव सफिशिएंट लेवल ऑफ हार्मोन्स इन देम. एंड वाई दे डोंट हैव, देयर आर सो मेनी रीजंस. नंबर वन, उनमें से एक रीज़न ये आ जाता है कि एक आपने कंडीशन सुनी होगी जिसको हम नर्वोजा कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोजा, एंड इट्स बेसिकली a psychological condition where a girl specifically starts thinking that she is getting overweight. एंड वैसे भी हमारे मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, हम सारे जो चाह रहे होते हैं वो क्या चाह रहे होते हैं, खासतौर पे फीमेल्स. आई एम नॉट अगेंस्ट फीमेल्स, बट दैट्स क्वाइट कॉमन. यू मे अग्री विद मी or may not, but I think you will, most of them agree on this point, that most of the females
want to have a lean shape, lean figure they want, and that is why they are not taking appropriate quantities of fat in their diet, and they are totally cutting off the fat, and they are doing so much exercise, they are taking only protein, and obviously that is going to give you the lean shape, but you should have certain fat content in your diet. अगर आपने खुद से ही जो है ना विदाउट एनी प्रोफेशनल ट्रेनर ये डिसाइड कर लिया, जिसको हम सो कॉल्ड डाइटिंग कहते हैं, जिस जहाँ आपने खाना ही छोड़ दिया है, तो यू विल नॉट बी ओनली डेफिशिएंट इन अदर न्यूट्रिएंट्स, यू विल आल्सो गेट द डेफिशिएंसी ऑफ फैट, एंड दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कोलेस्ट्रॉल. ऑब्वियसली जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे, यू विल हैव वीकर बोन्स, यू विल हैव bad growth of cells, and you will have different deficiencies of different sex hormones, and that ultimately going to cause problem for you. ठीक है, and this is really important that to avoid all these things you have to have a decent content of fat in your diet, so that जो आपके sexual hormones हैं, जो आपके cell की growths हैं, और जो आपके जो bone की organification है through vitamin D, वो सारी appropriate होती रहे, और आप बहुत कोई सिवियर डेफिशिएंसी से सफ़र ना करें. इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. बहरहाल, so now just that's not a complete discussion, we have just started this discussion, so just I'm giving you time now just note these all points, and I will explain everything through diagrams inshallah after writing the whole model, but for now just note this down and then we'll move forward. ठीक है, just note this down. Okay guys, you must have noted these points down, and these are really important because otherwise you will not be able to explain the model specifically. आप बहुत ज़्यादा डिटेल में निकल जाओगे. नोट्स में भी आपको ये पॉइंट्स लिखे हुए मिलेंगे, बट अगेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो, बिकॉज दैट्स एन हेल्दी प्रैक्टिस. ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग पॉइंट्स about the structure of the cell membrane. So these all the points were basically dealing with the lipid part of the cell membrane, na? That's 75% composition, where I written down that कहाँ लिखा था मैंने, ये 75% पोर्शन के बात हमने की है. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम होता है, लेस देन 1% होता है. ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारे पास कुछ ना कुछ 24-25% के करीब जो है ना कुछ और कॉम्पोनेंट भी है जो हमारे पास बाकी है, उसको हमने डिस्कस करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट. Okay, now the next point suggest, I don't know which point is, I think it's point number 6, I guess so. ठीक है, now in point number 6 they said that the lipid bilayer, phospholipid bilayer, is continuously interrupted. Is continuously interrupted by large number of molecules. क्या कहा हमने कि द फॉस्फोलिपिड बायलेयर इज कंटिन्यूसली इंटर, यानी बायलेयर तो हैं लेकिन ठीक है ना,
interrupted by large number of protein molecules. Again, I'll show you in the diagram, but first we have to complete the theory part. So this lipid bilayer is continuously interrupted by large number of protein molecules. Now there are two types of protein molecules in which are interrupting the layers. Two types of protein interrupting. Number one, integral proteins or intrinsic proteins. Number two, peripheral or extrinsic proteins. So lipid bilayer is continuously interrupted by large number of protein molecules. Now the protein molecules in the layer are of two types, intrinsic and extrinsic. Intrinsic and extrinsic. Now what are intrinsic molecules? Intrinsic क्या होते हैं? Those which are completely embedded in lipid bilayer. Those proteins which are completely embedded, पूरे धसे हुए हैं lipid bilayer के अंदर, those protein molecules are called integral proteins. ठीक है? Those protein molecules which are completely embedded in the lipid bilayer are called intrinsic molecules, and those which are loosely attached or partially embedded in lipid bilayer. Those which are completely embedded are called intrinsic proteins, and those who are loosely attached or partially embedded in the lipid bilayer are called extrinsic proteins. ठीक है जी? We have to talk about them separately in detail in the details of this model, but अभी जो basic points हम चूंकि cover कर रहे हैं, so that's I think enough about that. So basically the remaining 25% or 24% exactly, the composition is by proteins. ठीक है ना? And those proteins which are there are of two types, if exactly speaking. Some of them are completely embedded in the lipid bilayer and some of them are loosely attached to the lipid bilayer. सही है जी? इसके बाद एक और भी चीज़ है, और वो क्या है? There are glycoproteins and glycolipids molecules on the surface of cell membrane, forming a sheath called glycocalyx. What is this last point said? That अब आप जान रहे हो कि लिपिड भी है, प्रोटीन भी, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है. तो अब लिपिड और प्रोटीन के साथ ना ऑलमोस्ट 1% के करीब some carbohydrate molecules are attached to the lipid part, some carbohydrate molecules are attached to the lipid part, we call them glycolipids, whereas some carbohydrate molecules are there on the surface which are attached to protein.
देखो ना, इमेजिन करो लिपिड बाइलेयर चल रही थी, उसमें जगह जगह प्रोटीन भी था, तो कुछ लेट्स सपोज दिस इज लिपिड, ठीक है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच्ड है, सो वी आर कॉलिंग देम ग्लाइकोलिपिड, और कुछ जो है वो प्रोटीन से अटैच्ड है, तो दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, एंड दे जो कंटिन्यूसली चल रहा है ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन 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 ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोलिपिड। तो एक अगर आप उसको ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी पहले एक कवरिंग आ रही है ओवर द लिपिड एंड प्रोटीन of glycolipid and glycoprotein. So we call that sheath, the covering is called glycocalyx. ठीक है, so that's all about the basic points of the structure of the cell membrane. We haven't, I haven't explained this any point in with the reference to diagram. Inshallah, we'll do that in the next lecture. And I think you have noted all these points. If you haven't noted them, just note them down. And inshallah ta'ala, I'll meet you guys in the next lecture, and we'll be talking about the explanation of these points, and I'll show you the diagram so that you can get the concept of what we have written up till now. So उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा, and you have all the points जो कि हमें आगे डिस्कस करने। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चीज़ों को सेल्फ स्टडी करते रहिएगा, अपने आप को हेल्दी रखिए, सेफ रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।